मैं मिमी बजाज, फाउंडर मेंबर ऑफ फिलेंथ्रॉफी क्लब। हम इस बारी एज अ फिलेंथ्रॉफी क्लब में एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को प्लॉगर्स ड्राइव कर रहे हैं। प्लॉगर्स ड्राइव का मतलब होता है कि हम यूथ को इन्वॉल्व करके मॉर्निंग में जॉगिंग के साथ साथ जो हमारी सड़कों पे प्लास्टिक कचरा फैला हुआ है वो हम इकट्ठा करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के साथ हम इस ड्राइव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें डीसी सर फ्लैग ऑफ करेंगे ऑन एट 5 AM इन द मॉर्निंग और 12 रूट डिफ़ाइन किए हैं हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, और उधर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी की तरफ से भी हमारे को काफ़ी सहयोग दिया गया है। और उसमें हम सारे 5 रूट्स पे फिलेंथ्रॉफी क्लब के 2-2 ऑब्जर्वर होंगे जो कि गाइड करेंगे वहाँ के लोगों को। तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 की हमारी गैदरिंग हो जाएगी। तो ये सब अलग अलग रूट से जो रूट उनके घर के पास पड़ता है वहाँ से जॉगिंग स्टार्ट करेंगे और सारा कचरा उठा के बैग्स हम देंगे उनको, उन बैग्स में डालेंगे। फिर हम सारे जने रोज़ गार्डन में इकट्ठे होंगे जहाँ डीसी सर आगे इसको और कंक्लूड करेंगे। एंड सारा कचरा जो इकट्ठा किया जाएगा वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इकट्ठा करके उसे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दे देगी। और इसके अलावा वहाँ पे हम रोज़ गार्डन के अंदर तकरीबन 7 o'clock के करीब इकट्ठे होंगे सारे, और वहाँ पे हम कुछ फ़न एक्टिविटीज़ जैसे योगा क्लास, डांस एंड ऑल दैट, फ्लैश मॉब्स वगैरह करेंगे जिससे कि रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी। तो मैं ये चाहती हूँ मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन करें। हम वहाँ पे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी देंगे और हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। इस लिंक पे करके कोई भी इसमें आ सकता है, और हमने बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन को इसके अंदर शामिल होने का इनवाइट भी भेजा और उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करने का हमारे को एश्योरेंस दिया। थैंक यू। Hello, good evening. On behalf of Philanthropy Club, we all getting together on Environment Day for a very good cause. That we will be picking up trash from all the places. We have actually different places from where we all will be gathering. And ये बहुत ही अच्छा cause है। तो जहाँ जैसे हमने different जगहों पे अपने वो बनाए हैं, points बनाए हैं जहाँ पे we will all be gathering, and we will go. There are a lot of institutions who are getting together, like colleges, schools. So we have different points where all the students and all the members of Philanthropy Club will gather together, and we will create this great cause and start a new beginning. हाँ जी, मैं लखमिंदर डिकी छाबड़ा आज सब ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਪਲੌਗਰਸ ਡਰਾਈਵ ਲਈ। ਪਲੌਗਰਸ ਡਰਾਈਵ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਟਰੈਸ਼ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਬੀਟ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਿਫਾਫੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ ਸਿੱਟਣ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੱਟੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ 1000 ਜਾਣੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। 500 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਸ, NGOs, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 32 ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ we are all together doing this. ਇਕੱਲੀ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਵਿਦ ਦ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, municipal corporation and 32 institutes of Ludhiana. It means something. ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੇਂਜ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਆਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪੀ ਕਲੱਬ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, DC ਸਰ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਰ, ਤਾਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। Thank you. Hi, I'm Dr. Harkamal Sekho, a consultant dermatologist, and I'm part of Philanthropy Club, and I'm so happy to introduce this Bloggers Drive on 5th of June. Philanthropy Club plus district administration, including our Honorable DC,
we are organizing a Ploggers Drive. What that means basically is that we'll be jogging, plus we'll be collecting the garbage from the roads. Let's make Ludhiana clean and green again and participate in this. It's going to be 5:30 in the morning on 5th of June. It's just going to take 1.5 hours from 5:30 to 7 a.m. And you can participate, your children and everybody who's free, who's jogging at that time can join us for this very admirable cause. Hi, I'm Dr. Shweta Miglani from Skill Mapping Career, representing Philanthropy Club today. So we are coming up with a very good initiative on Environment Day, June 5, that is the plogging activity. So in collaboration with the Municipal Corporation and the administration of Ludhiana City, I hereby request all my Ludhiana citizens to come together and join us in this particular drive where we can pick up the waste or the plastic bottles from the roadside and can dispose it off properly so that we can act responsibly towards our community and the environment. So this is a request to all the citizens out here to join us on this drive on June 5th, morning 5:30 a.m.